Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. तो इस पता कि रात करें अवस क्लास मल्टीप्लिकेशन मेथड तो फार्मूला वुचो अस कित पय बनान फार्मूला आया वैसे x और b1 c2 minus c1 v2 equal to y और c1 a2 minus a1 c2 equal to 1 और a1 b2 minus b1 a2 ये वुचो अस रात फार्मूला कित पय बनान तो रात के अस गोडनी पार्ट यत जन ऐसे solution that I no solution. All choice to you three part any exercise on question number 1. Second part show 2x plus y equal to 5, 3x minus 3x plus 2y equal to 8. I switch godnet chesi karan ye 5 karon yapor shift even 2x plus y minus 5 equal to 0 and this is equation number 1. So doyam by I see 3x plus 2y minus 8 is equal to 0. This is equation number 2. Or you asal hayat user asal form image cross multiplication method is user is aran catch x the y the constant the ek side asan. There is a1 b1 c1 1 so yeah a2 b2 c2 1 in purchase the cheese. Now we have to check a1 ये इस विचार चीज इशू 2 was बराबर गोडनिच इक्वेशन on x coefficient and b1 it is 1 c1 is minus 5 इथे पर it is a2 which one it is 3 b2 it is 2 and c2 is minus 8 एम पच जुन ब्याक कम इस कारण ब्याक स्टेप आसान छु ये चेक करना पाते छ इस वुचान के अत गोडनेथि छ इस वुचान के अत को सॉल्यूशन छ तेम खतर जरूरी एस्यूम जन कंडीशन त्रे रेशियो नस a1 a2 b1 b2 c1 c2 यम जन त्रे कंडीशन छ तेम छ ऑलरेडी परमज इस वुचो ये रेशियो a1 by a2 कत बराबर छु अब a1 by a2 यहां पे इट इज 2 by 3 ये रिड्यूस गसित की then b1 by b2 it is 1 by 2 क्योंकि गोडनिक छन बराबर के a1 by a2 छन बराबर b1 by b2 उसके 2 by 3 1 by 2 स्टेशन 3 सान जरूरत इसके तो अत हालतस मंज चेमल इक्वेशन इस वुचमोत पतवन कैंसल एक्सरसाइज मंज के एमन छ आसान यूनिक सॉल्यूशन a1 by a2 is not equal to b1 by b2. Therefore, equations have a unique solution. This question of what you say कि तुम करियो सच एवन इक्वेशन को सॉल्यूशन छो पछ देखिए कि इनके इज a unique solution we have to find it तो तेम खतर छ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करू सो क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन छु इसलिए करो इस सॉल्यूशन काटने की कोशिश है तेम खतर छ वर्क इन फार्मूला ऑलरेडी जहनस में रात वुचमु द फार्मूला इज x डिवाइड बाय b1 c2 minus c1 b2 is equal to y1 a1 b2 minus b1 a2 is equal b1 c2 minus c1 b2 y over c1 a2 minus a1 c2 is equal to 1 over a1 b2 minus b1 a2 फार्मूला लेकिन थोड़ा ख्याल था अस शो x अतमन आसान से कोएफिशिएंट्स a1 a2 तुम छ अत की y मस आसान कोएफिशिएंट b1 b2 तुम छ अतमन की हमान तो कांस्टेंट टर्म c1 c2 आसान तच छ मेवन ओत फार्मूला मस की इस पे फार्मूला बना फार्मूला लिखने पाते छु ऐसी वैल्यू इवन पन दी सो दिस इज x डिवाइड बाय b1 c2 बस ऑलरेडी लिखे तो b1 is 1 and to c2 is minus 8 minus c1 is minus 5 and to b2 is 2 is equal to y over c1 a2 c1 is minus 5
into A2, A2 is 3, minus A1, that is 2, into C2, C2 is minus 8, is equal to 1 divided by A1 B2, it is 2 into 2, minus B1 A2, B1 A2, 1 into 3. यानी it is x over 1 into minus 8, it is minus 8. Minus into minus went plus, 5 into 2 go 10. Okay, by minus 10, minus into minus went plus, it is plus 10. Equal to y over minus 5 into 3 is minus 15, plus minus minus plus 2 into 8, it is 16, equal to 1 divided by 4 minus 3. Or we can write x divided by 10 minus 8 is 2, equal to y divided by 16 minus 15, it is plus 1, 1, equal to 1 divided by 4 minus 3 is 1. M पर करो इस x constant term यानी first third second third आप इसे compare ऐसे को लिखिए xy2 is equal to 1 by 1 and y by 1 is equal to 1 by 1, or cross multiplication x into 1 by x equal to 2 and y is equal to 1 and 1 is 1. If put in hekan jis cross multiplication ek zariye m values kade agar zara is earth equation by elimination method ya substitution method karon answer jawab is jawab is bilkul exact ऐसे ही रोज़न अगर जन ये जवाब राउंड के that means इस करना जाए तेले गलत करें. So this was second part. इन पर शो इस एम third part. Third part जो ऐसे 3x minus 5y is equal to 20. 6x minus 10y is equal to 40. तो पहले हम इन्हें इसी शेप में लाएंगे. इस पर वुचमुत छो इस पर गॉडिक स्पॉट्स पर दो स्पॉट्स में वो इस पर हुकुम 20 अनोन इस अपोर इवन ऐसे 3x minus 5y minus 20 is equal to 0 and this equation number 1. 6x minus 10y minus 40, ये 40 plus या 4 transpose करो even minus equal to 0 and this equation number 2. एम पर करो इस गॉडिश को इस करो चेक कि आपको सॉल्यूशन छो केम खुद चाहिए रेशियो जरूरत मगर रेशियो करने ब्रोन वुचो इस a1 क्या चाहिए it is 3 a1 3 b1 to minus 5 and c1 is minus 20. A2 it is 6, B2 minus 10, C2 it is minus 40. Our ratio A1 by A2 is equal to 3 by 6 and we can reduce it. 3 by 6 is 1 by 2. 3 1s are 3, 3 2s are 6. इथे पर उछो विच B1 B2 it is minus 5 over minus 10. Again minus minus cancel. 5 1s are 5, 5 2s are 10. 1 by 2 again. क्योंकि गॉडिक से बराबर so we have to check the third one. C1 by C2 चेसे जरूरी check करूँ. That is minus 20 by minus 40. इसे को सेपर कैंसिल करिए माइनस माइनस कैंसिल करिए it is 2 by 4 2 by 4 is again 1 by 2. So all the three ratios are equal. A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2. त्रिशवे बराबर तो ये लियम त्रिशवे बराबर आसन then the equations have many solutions.
ये many solutions आसन तेल चुम काढने ज़रूरत की so इसलिए कोई नहीं जाए since a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 therefore equations have infinitely many solutions या simply equals many solutions. The many solutions are